In this video, I'll talk about 3 very important methods in which you can plan to play any song on your own. जब मैंने शुरुआत में फ्लूट बजानी शुरू की थी तब मेरे पास ये कोई गाइडेंस नहीं था. ये होप करता हूँ कि जस्ट वॉचिंग दिस वन वीडियो विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर फ्लूट जर्नी एंड यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन द वे ऑफ प्रैक्टिस. शुरुआत में एक साथिया ट्यून बजाकर प्ले करना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था सा किधर है रे किधर है. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू डू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर एंड ट्राइंग टू सी इफ आई एम गेटिंग द राइट साउंड. मेरे को ऑलमोस्ट 3 मंथ लगे कोई भी एक गाने को अपने से क्रैक करने के लिए. उसके बाद मैं जब दूसरा गाना बजाने की कोशिश की तो मुझे उसके लिए 2 मंथ लगे और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली 1 महीना एंड स्लोली ग्रेजुअली नाउ आई कैन जस्ट लिसन टू अ ट्यून कपल ऑफ टाइम्स एंड आई कैन जस्ट प्ले विन लाइक नो टाइम. तो ये जर्नी 3 महीने से लेके 3 मिनट की जो जर्नी है उसकी जो वक्त लगा है मुझे, ये अगर आपको इससे भी ज़्यादा इसको कम करना है ये स्ट्रगल को, तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए तो आपको उसकी पूरी आपको जानकारी मिलेगी. So if you have not subscribed to my channel, first click on my subscribe button and subscribe to this channel so that you get such very helpful videos in future also, and like this video so that you get updated about my next video. तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी गाना अपने खुद से मन से बजाना है तो पहले तो आप ये समझ लो कि ये ओवरनाइट नहीं होगा. मैं यहाँ पे आपको कोई भी जड़ी बूटी नहीं देने वाला हूँ जिससे यू कैन प्ले दिस ओवरनाइट. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू understand the concept of fill in the blanks. What is fill in the blanks? Fill in the blanks is a concept where, let's say आपके पास कोई एक notation होगा नहीं. That notation you have been referring to for good amount of time and now you can play the song looking at the notation comfortably. It's been 1 to 2 weeks you have been playing along with the notations and you are very confident about that. But you are still dependent on the notations. Now, first thing you need to do is that first you try to play the same song without looking at the notation. आपने already 2 हफ्ते के लिए वो गाना बजा चुके हो आप notation देख देख के. Now avoid the notations and see if you can remember the notations and play. What will happen? The first step is that after some time you will forget about certain notes because you are not used to playing by your mind. So you will forget about the notes. Now, इस टाइम पे instead of going and rushing for the notations, what you should do is you should try and do the permutation and combination in your finger on your own. So अगर आप एक गाना बजा रहे हो सा नी सा ग रे सा नी द नी सा नी सा ग रे सा नी द नी और आप आगे वाला पार्ट भूल गए हो और आपकी फिंगर्स को पता नहीं है अभी आगे की कैसे बजाना है. ला 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 आपके दिमाग में ये ट्यून है बट आपको नोटेशन पता नहीं है. ला 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 ला. सो व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस विथ सच, नाउ एट दिस पॉइंट व्हाट यू डू इज दैट यू स्टार्ट योर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ला 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 टेक दिस 4 नोट्स ला 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 एंड देन डू द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. जब तक आपको सही आवाज़ नहीं मिलती है आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए. सो यू स्पेंड टाइम इन डूइंग द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स टिल द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द सॉन्ग. जैसे ही आप ये करोगे आपके छोटे छोटे सेटिस्फैक्शन लेवल्स पॉप आउट होना शुरू हो जाएंगे. लाइक पॉपकॉर्न यू विल स्टार्ट सीइंग, माइंड विल स्टार्ट ट्रिगरिंग सम न्यूरॉन्स. ये है. तो ये सबसे जर्नी का सबसे पहला पार्ट ये है कि यू नीड टू ट्रिगर योर न्यूरॉन्स, ओके, बाय डूइंग एंड ट्राइंग टू फिगरिंग आउट. बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न टू प्ले एनी सॉन्ग, ये कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आएगा आपके दिमाग में कि आपने अपलोड किया और इंस्टॉल हो गया. यू विल हैव टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग एंड द बेस्ट वे टू डेवलप इज दैट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बट not just random permutation and combination, songs which you really like, songs which you've been playing looking at the notations, you take those songs and then you try to play fill in the blanks. If it is making sense, just type it is making sense in the chat box. So सबसे पहला journey ये है, trying to play a notation and then fill in the blanks. Second important part, once you're able to play such tunes for some time, then you try and take a tune which you have been hearing for multiple times daily. It can be a song of your prayer which you're playing in your house daily, or a song which you've been listening from your childhood, or song which can be your car tune which you are daily listening every time you take a reverse or you're going ahead, or your lift tune, or your mobile ringtone if it is a song,
or it can be a caller tune of someone, your loved one, which you've been listening daily when you call that person. So what is happening is that because ये tune आप रोज सुन रहे हो, आपके दिमाग में वो छप चुकी है. It is like daily morning when you try to brush, like it's so easy to brush with your hand which you are using because it has become your habit, your practice, easy हो गई है. बट यही में अगर आपको हाथ चेंज करने को बोलो तो थोड़ा स्ट्रगल होगा, राइट? तो अगर कोई एक ऐसी ट्यून आप लोगे जो आपने सुनी नहीं है तो वो डिफिकल्ट होगी आपके लिए. बट अगर आपने कोई ट्यून अगर आपने ऐसे ली है जो आप हमेशा से जो बजाते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो ऐसी ट्यून आपके दिमाग में उसकी मेलोडी क्लियर है, उसकी ग्राफ क्लियर है. तो आप ऐसी ट्यून ले लीजिए और ऐसी ट्यून लेने के बाद आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन शुरू कीजिए. और जब भी आप वहाँ पे मिस्टेक करोगे तो आपकी दिमाग में ये बहुत जल्दी आप फिगर आउट कर पाओगे कि ये गलत है. नए गाने में आपको ये फिगर आउट करना डिफिकल्ट होगा कि ये गलत है या नहीं. सो आपको सबसे पहले ऐसी ट्यून लेनी है जो आप फेमिलियर हो और उसके बाद परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कीजिए. एंड डोंट गिव अप सो इजीली. यू कीप डूइंग इट फॉर 1 day, 2 days, 3 days, let it be 1 week, 2 weeks, let it go. You take small parts of the song. Don't take like a very big song. Take a tune. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने दा रा 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 या तो दा रा 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 दा रा 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 रा. हजारों बार ये ट्यून सुन चुका था. उसके बाद मैंने ट्यून आई स्टार्टेड प्लेइंग. तो फर्स्ट टेक द ट्यून विच यू आर यूज्ड टू मल्टीपल टाइम्स. That's the second thing that you can do after filling the blanks or journey that you can go on for, like, let's say 1 or 2 months. And then you go to this journey. And once you do this, then which is the small tunes, once you are able to do this, let's say if you are able to crack at least 2 to 3 such tunes, simple, small 1 or 2 liners, then you go to a third tune or song, which is, let's say, a big song, but again, relatively smaller, which are like 4 or 5 lines kind of a song. And then you start playing with the first line. First, just crack the first line slowly. Then the second line, then the third line, then the fourth line. So while the song is one, you break it down into each different line and then you try to master each of the line. And then you try to get it better at playing the song. As you grow in your journey, as you practice this multiple times, then it will develop the sense of understanding of swaras. Ki what are these different steps of swaras which you need to step into and the distance between two swaras. And slowly and gradually, initially it may take long period of time, but slowly and gradually it will start reducing the time that you are taking to complete such exercises. And then you can always create such notations very easily as you go along and play that. So there is a method to go about playing this. And this is completely something that I have discovered over a period of time. You will not find this methodology anywhere else. Okay? This is something that this is my experience of 18, 19 years, which I'm sharing in like the ready-made chocolates. I wish somebody was there to tell me like this. So follow this method and if you try to do these things, sabse pehle try to understand the basic concept of saptak and that what all different types of swar which are possible, which are different octaves which are possible, so that you know how many different sounds you can create in flute. There are 25 different sounds which you can create in flute, which is आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि उसकी आवाज़ कैसे है, बट एटलीस्ट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि 25 आवाज़ निकल सकती है. उसमें कौन सा मिडिल ऑक्टेव है, कौन सा हायर ऑक्टेव है, कौन सा लोअर ऑक्टेव है. बिकॉज म्यूजिकल नोट्स आर नॉट जस्ट सारी गमा पद निसा. देयर आर मल्टीपल डिफरेंट नोट्स एंड डिफरेंट पिच ऑफ द नोट्स. So you need to understand these things before you try and attempt these things. So again, your learning journey has to be step by step. You should be playing long notes. You should be playing different octaves. And you will find more details in the links below in the description so that you get to learn these things step by step. And then you can progress in your learning journey. So if you found this method useful, just type useful in the chat box and you can start learning step by step. If you want to learn more about learning with me in a structured way, you can just click on the link in the description in the webinar where I will teach you about how you can learn each of these aspects of things step by step when we meet live.
Thank you so much for being in my YouTube channel and looking forward to help you in future videos. Thank you so much.